Olympus Mons is the highest mountain of the solar system. It is a volcano on Mars. It is nearly 3 times higher than the Earth's highest mountain, Mount Everest. रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है और उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ये आयरन्स होते हैं. उसमें वो रेड कलर के रेडिश आयरन्स होते हैं, इसलिए उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट कहते हैं. और ये अर्थ को इसलिए रेड ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे वाटर हैं, बहुत सारा पानी भर गया है, मतलब बहुत सारा पानी है, इसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. Jupiter. Shall we start next? Jupiter. It is the 5th planet from the Sun. It is 778 million kilometers from the Sun. It is the largest planet of the solar system. It will take more than 300 Earths to fill it up. It rotates very fast. It takes just 9 hours and 55 minutes to complete one rotation. अब मुझे रोटेशन के बारे में पूछना है कि रोटेशन मतलब होता क्या है. जुपिटर के आगे पीछे रोटेट करता रहता है, ये घूमता रहता है. Okay. However, it takes 12 long years for one revolution. It is a giant gas planet, Saturn. Saturn. It is the 6th planet from the Sun. It is 1427 million kilometers from the Sun. It is the second largest planet of the solar system. Saturn also rotates quite fast. It completes one rotation in 10 hours. However, it takes 30 years to complete one revolution. It is a light planet mainly made of gases. It has rings or gases, dust and rocks around it, which make it looks very beautiful. देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है. कौन सा प्लेनेट है ये? ये सैटर्न है. इसमें क्या क्या है? रॉक्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट हैं. Uranus. It is the 7th planet from the Sun. It is 2870 million kilometers from the Sun. It also has rings around it. It is bluish in color. It spins on its side. It takes 18 hours to complete one rotation, while 84 years for one revolution. Neptune. It is the 8th planet from the Sun. It is 498 million kilometers from the Sun. It appears like a big blue balloon. किस तरह दिखाई देता है? बड़ा ब्लू कलर का गुब्बारा. It takes 16 hours to complete one
rotation, while 164 years to complete one revolution. It has several dark spots on it. Okay. The satellites. किस बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग? अब हम लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स के बारे में। हमें एक चीज़ पूछनी है कि सैटेलाइट्स होती क्या है। Satellites are small objects that revolve around the planets. They revolve around the planets in their fixed orbits. They do not have their own heat and light. They reflect the light of the sun. All planets do not have satellites. A planet may have one or more satellites. Moon is the only satellite of Earth. Number of satellites of different planets. Planet. Number of satellites. Mercury, no satellite. Venus, no satellite. Mercury में कोई सैटेलाइट नहीं है. Venus में भी कोई सैटेलाइट नहीं है. अर्थ में एक है. वन है. Earth has one. मार्स के पास 2 है. जुपिटर के पास 67 है. सैटर्न के पास 62 है. यूरेनस के पास 27 है. नेपट्यून के पास 14 है. Okay. No more. A satellite may be natural or artificial. Man-made. Moon is a natural satellite, where satellites like GAST 6 are artificial, which are launched for communication purposes. Moon is the Earth's only natural satellite. It is the 5th largest natural satellite in the solar system. It is 4 lakh kilometers away from Earth. Around the Earth, the moon is. It takes 27.3 days to complete one revolution around the Earth. The moon is rocky and has big holes. मून क्या है? रॉक है, पहाड़ों चट्टानों से, और उसके अंदर क्या होल भी है. हाँ, छेद है. तभी छेद तो. में क्या चूहे रहते हैं? नेक्स्ट. ओके. नील Armstrong and Edwin Aldrin were the first to reach the moon in 1969. ये जितने थे ये चांद पर. एक मिनट हमें ये कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए. ये नेम है बेटा, ये नेम है. ये सब चांद पर भी लोग जाते हैं ना रहने के लिए. अच्छा, ये जितने भी नेम दिए गए हैं ये लोग मून पे गए हैं. मून पर गए हैं. फर्स्ट टाइम ये लोग गए थे 1969 में. यस. नेक्स्ट. Our Earth, a unique planet. Earth is the only planet in the solar system that is known to have life. So it is a unique planet. It is because of the following that life is possible on Earth. लाइफ कहाँ पॉसिबल है? अर्थ पे, क्योंकि उस पर एयर होती है. Presence of air. There is a layer of air around Earth. It is called atmosphere. It is made up of life supporting gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. हम लोग क्या करते हैं? आईटिक
ऑक्सीजन एंड ऑक्सी रिड्यूस क्या करते हैं? हाँ रिड्यूस क्या करते हैं? कार्बन डाई हाँ, हम लोग के ये इस अर्थ पे ये वाली गैसेस होती है, जैसे सपोर्ट ये वाली गैसेस। supporting gases like हाँ, oxygen, nitrogen, and नाइट्रोजन और carbon कार्बन डाइऑक्साइड dioxide. We breathe in oxygen. That is why we remain remain alive. alive. Presence of water. Water is also Essential. essential for survival. Nearly 7%, 70% is 70% of the earth surface in water. Through most of this water, मैं वाटर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ये कि हम लोग के यहाँ जो सॉल्ट आता है वो इसी वाटर के अंदर से ही आता है। The earth surface is water. Through most of this water is in ocean and seas, which is not drinkable. ड्रिंकेबल, मतलब ये यहाँ जो सी वाला वाटर होता है ना, उसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर ड्रिंक सकते। नहीं कर सकते क्योंकि ये प्योर नहीं होता, ये साफ नहीं होता। इसको हम लोग को साफ करना पड़ेगा, तभी तो आरओ का पानी हम लोग पीते हैं। स्टार्ट। Through most of this water is in ocean and seas, which is not drinkable. Still enough drinkable water is there in rivers, ponds, and below the earth. Moreover, rainwater fills the river and ponds. अच्छा, यहाँ जो रेन वाटर के बारे में आ रहा है, रेन वाटर वो होता है जो बारिश में हम लोग का पानी आता है। और मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम लोग को कुछ वाटर सेव भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की अर्थ को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टिंग करते हैं वाटर की। जब हम लोग ब्रश करने जाते हैं तब वहीं टैप खोल देते हैं। और जिसके भी घर में शावर लगा है वो शावर को मत यूज़ करें, क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है। हम लोग बकेट का भी कर सकते हैं, बकेट से भी कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपके यहाँ बारिश हो तो आप थोड़ा सा पानी बचा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग गर्मियों में जब रहते हैं तो बहुत सारे नदियों का, बहुत सारे रिवर्स का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को पानी नहीं मिल पाता है। अगर वही पानी हम लोग बचा के रखेंगे तो वो पानी हम लोग पी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। Rain water fills the river and ponds, because of which they do not dry up. Distance from the sun. Our earth is an optimum distance from the sun. Hence, people living here. It is neither too hot nor too cold. Its average temperature is 17 Celsius, which is breathable bearable for people living here. If the earth would have been closer to the earth, life will not have existed because of the extreme heat. If it would have been farther from the sun, life would not have existed because of the extreme cold. मैं एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पोल्यूशन फैला रहे, प्लीज़ आप लोग मत फैलाइए, क्योंकि अगर आप लोग पोल्यूशन फैलाएंगे तो हमारी अर्थ गैस से भर जाएगी और हम लोग को उससे बीमारी हो सकती है। हम लोग को क्या रहेगा, ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि आप लोग प्लीज़ प्लांट्स को कट मत कीजिए, और अगर कट भी कर रहे तो हमेशा उसको और लगाते रहिए। हम लोग को अपनी अर्थ को बचाना होगा। सेव वाटर, सेव ट्रीज एंड सेव ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग का। यस,
शुरू करते हैं हम लोग आगे। ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया ना। ओके। शार्प शेप, शेप, साइज एंड Surface सरफेस of- ऑफ अर्थ मतलब Through उसकी रचना, उसका साइज और उसकी सतह किसकी? पृथ्वी की। मुझे एक चीज़ पूछना है नादेपी कि हम लोग जो सड़क पे स्पिटिंग करते हैं, क्या वो करना सही है? स्पिटिंग यानी कि अगर थूक वूक देते तो। नो, इट्स अ बैड हैबिट। लेकिन बहुत से लोग इसके को मैंने लिए करते हुए देखा है। तो इसीलिए तो हम उन लोगों लेकिन को अगर जैसे मैं रोड पे जा रही हूँ, कोई अंकल स्पिटिंग कर रहे हो, तो मुझे उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए, लेकिन सब लोग फॉलो नहीं करते हैं ना रूल। यस। अगर सब लोग रूल फॉलो करें तो अब आप लोग हैं, आप लोग पढ़ लिख कर आगे फॉलो करेंगे तो जनरेशन आएगी वो उसको मैं और कई बार सड़क पे चिप्स का पैकेट फेंक तो देती हूँ। इट्स बैड हैबिट। यस। अगर सड़क पे डस्टबिन नहीं हो तो अपने पर्स में कैरी कर लीजिए, घर आकर डस्टबिन में डालिए। ओके। ओके, नेक्स्ट। मैं मजलिस में हमेशा मम्मा को ओके कैरी आगे कर देती आगे। Shape, size, and surface of Earth. Through the Earth seems flat to us. It is actually spherical, round, like an ostrich. ऑरेंज। Orange. Its size is so big that the ground almost looks to be flat. This helps in the movement of the people through a surface has deep oceans and high mountains. There is enough place for people to live comfortably. आप कुछ बोलना चाहेंगे फिनिश करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितने चैप्टर मतलब क्या क्या पढ़ा।